Hello guys, Cam Joe. I'm your host Nishit Dave, and what a day of Test cricket we have just had. Session 1 completely belonging to England. Session 2 India making a comeback. Session 3 again England cleaning up the swipes. Now it was nothing short of a thriller, and we have a lot to unpack. So without wasting any further time, let's go in. भाई साहब शुरुआत से शुरू करते हैं. इंडिया लॉस द क्विक विकेट्स, और जो पिछले वीडियो में हमने बात की थी, इंग्लैंड भाई साहब वीडियो देख रहा है एंड दे अंडरस्टूड देयर असाइनमेंट. हमने कहा था 6-7 मीटर की लाइन पे बॉल करना पड़ेगा एंड जो रूट वाज द मोस्ट इफेक्टिव बॉलर जिनको कम स्पेल्स दिए गए, बट दिस टाइम इंग्लैंड स्टार्टेड ऑफ विद जो रूट एंड ही वाज बॉलिंग दैट 6 to 7 मीटर लाइन. जडेजा को जो डिसमिसल हुआ, आई से अनलकी था, अंपायर्स कॉल पे आके रहा, बट अक्षर पटेल सिमिलर 6-7 मीटर की लाइन पे आया एंड इट स्टेड सो लो. Day 3 पे variable bounce quite normal and the pitch has even slowed down. तो स्पिन जो स्क्वायर टर्न हो रहा है उसको खेलना थोड़ा आसान हो जाता है. एंड मैंने कल के वीडियो में ये कहा था कि शायद इंडिया को वापस बैटिंग नहीं करनी पड़ेगी, बट इंग्लैंड हैज प्रूव्ड मी रॉन्ग एंड इट हैज टेकन मी बाय अ सरप्राइज. The way England approached this 190 lead that they had in front of them is superb to see. England is making Test cricket so much more entertaining. भाई सब पॉजिटिवली आके क्रिकेट खेल रहे हैं. एक पॉजिटिव इंटेंट जिसे कहा जाता है, बेसबॉल जिसे कहा जाता है, इट इज मैडनेस विथ मेथड, प्रॉपर फुटवर्क, रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक एंड मतलब जो स्वच्छ भारत में जनरली हम स्वीप्स करते रहते हैं, सिमिलर वे इंग्लैंड इज गोइंग स्वीप, रिवर्स स्वीप, ऑल काइंड्स ऑफ स्वीप बिन प्लेड एंड एग्जीक्यूटेड. खेलना अलग बात होती है और उसको एग्जीक्यूट करना एक अलग बात होती है. फील्डर्स वर सेट फॉर दोज बाउंड्रीज जहां पे स्वीप ज्यादा रन ना दे, बट England players utilized their sweep shot as a defense mechanism against the spin and it played out. पहले सेशन में 89 runs with only loss of a single wicket. It was amazing effort cutting down that lead so fast. But we move on towards the session 2 and we are going to discuss the comeback that India made in that session 2. Also, there's a beautiful story behind this Jasprit Bumrah comeback for India. क्या हुआ? 20th ओवर हो चुकी थी, बॉल वाज स्टार्टेड टू रिवर्स अ बिट. गुड फॉर रोहित शर्मा, एक्नॉलेज किया उन्होंने एंड गेव बॉल टू जसप्रीत बुमराह. ही केम बैक जस्ट द सेशन 2 स्टार्टिंग, इंडिया कीपिंग गुड लाइंस एंड ही वाज बॉलिंग टू बैन डकेट जो काफी अच्छा खेल रहे थे, एक अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे थे. ही वाज टेकिंग दैट मोमेंटम अवे फ्रॉम इंडिया. Jasprit Bumrah around the wicket swings into Van Duckett, gets hit on the pad, huge appeal goes up. Jasprit Bumrah insists that it was out. Umpire gives it not out. Jasprit Bumrah is appealing for that review to Rohit Sharma, but Rohit Sharma declines. And just an over later, it was shown on the big screen that it in fact was out. Jasprit Bumrah was furious, not with his teammates, but with Ben Duckett, that it is his wicket and he will get it no matter what. And that's what happened. Next over, a beautiful setup, 3 deliveries outside of swinging out a little bit, and then 4th delivery coming in sharply. Again, Ben Duckett could not pick it up. He thought it was an outswinger, went for an expensive drive, pitching on the 4th to 5th stump, swinging in very nicely to get the top of the off. I love this delivery. It was one of the most beautiful delivery of the day. And Ben Duckett goes out. The celebration in itself showed how much that wicket meant to us. And then came in route. Of course, Jasprit Bumrah was fierce. He was on a different level high. जहां पिच completely spinners को aid कर रही है, वहां पे Jasprit Bumrah, the pacer from India, did his work, gets Joe Root to miss the in-swinger, gets his LB, and a huge wicket for India. 2 wickets in quick succession. And India has made a comeback. Johnny Bairstow नए प्लेयर आते हैं. Now, hands over Bumrah to Jadeja. Jadeja भाई साहब beautiful setup. सिर्फ 2 deliveries का setup था ये. Johnny Bairstow was playing very good. भले ही कम deliveries खेली थी, but he was looking very rest assured. अपनी डिफेंस को ट्रस्ट कर रहे थे and he was rotating the strike beautifully. जडेजा की ओवर आती है, एक बॉल ऑफ स्टंप पे पिच होके टर्न होता है and it turned square. Complete square turn हुआ. It raised questions in Johnny Bairstow's mind. And now, the mastery of Jadeja. The next delivery that he bowls gets pitched on just outside that off stump. Johnny Bairstow leaves it, thinking that भाई ये तो एकदम टर्न होके मिस ही हो जाएगा, but नहीं,
It does not turn. It comes in with that around the arm action of Jadeja and gets the sniff of the off stump, and the bails go flying. Matlab, it was a scene to watch out. England losing quick wickets, runs भी इतने नहीं बन रहे थे. India was bowling good lines, and there was a comeback for India. Of course, then their captain Ben Stokes and Ollie Pope build up a little bit of partnership. Ollie Pope के बारे में हम सेशन 3 की जब बात करेंगे तब और डिटेल में बात करेंगे, but they both were looking quite settled. Ben Stokes के बारे में बात करें, of course, naturally he is a very situational player. Situation के हिसाब से he maneuvers his strike rate, but this time I felt that he went into a shell. He was just coming in with the mindset that we need to go past this lead and then only I'll start hitting. In that, he went into a shell and he was just blocking. And now Ravichandran Ashwin, towards the end of the session, comes in, bowls a beautiful, complete, classic off-spinner delivery to a left-hand batter, pitching on the middle or the off stump, moving a little to get the sniff of the off, and again the bails went off flying. The session ended with a beautiful wicket of Ben Stokes. India comes back in the session, and again the hopes are high. Again, it looks like if India gets a few more wickets in the start of the session 3, India might not need to bat again. But Ollie Pope had other plans. Well, we move towards session 3. And as in the start of the video I mentioned, session 3 completely belonged to England. भाई साहब जिस हिसाब से Ollie Pope और Ben Stokes ने वो 100+ रन पार्टनरशिप की है, it was great to see. Of course, थोड़े बहुत चेंजेस यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा. Ollie Pope was using his feet very proactively. मतलब he is very quick through his feet. अगर आप देखेंगे his meet points जहां पे वो बैट को मीट करता है उनका बॉल while he is batting, he goes forward stretch 2 to 3 meters towards the pitch. इसका मतलब उनकी फीट यूज is very good, rotating the strike easily, क्योंकि जो फील्ड सेटअप है वो इन एंड आउट फील्ड है, एक तरफ से अंदर है एक तरफ से बाहर है, डीप पॉइंट लगाया हुआ है, स्क्वायर पे फील्डर बाहर है, लेग साइड पे फील्डर इतने अंदर है नहीं. सो इफ यू जस्ट स्निगल इट ऑफ देन you will easily get a single or a double. और यही हो रहा था भाई साहब. एक भी ओवर सेशन 3 में ऐसी नहीं गई है when the spinners were bowling where the boundary has not come or the player has not easily got doubles in the over. हर एक ओवर में आसानी से 5 से 6 रन बन रहे थे without taking any risk. और भाई साहब जिस हिसाब से ऑली पोप खेल रहे थे, रिवर्स स्वीप, एक दिल स्कूप भी मारा था उन्होंने. इट इज अमेजिंग टू वॉच दैट बैटर प्ले. और काफी विजिटी लगे थे जब वो बैटिंग करने आए थे. ही वॉज गेटिंग पुशिंग हार्ड टूवर्ड्स द बॉल, बट जैसे ही थोड़ा सेटल डाउन हुए, ही वॉज ट्रस्टिंग हिज डिफेंस, ही वॉज रोटेटिंग द स्ट्राइक एंड सिंगल्स वर अप फॉर द टेकिंग. जिस हिसाब से फील्ड सेट की हुई थी, सिंगल्स वर अप फॉर द टेकिंग. और जो इंग्लैंड ने काफी अच्छे से किया. मैंने जब केएल राहुल की भी बैटिंग डिस्क्राइब की थी, आई टोल्ड यू दैट ही वॉज रनिंग बिटवीन द विकेट्स वेरी गुड. स्ट्राइक रोटेट अच्छी हो रही थी, एंड दैट इज सिमिलर टू द वे Ollie Pope was playing. Of course, the sweep and the reverse sweep added to it. The boundaries factor were always going high, and singles were coming easily. Ben Stokes भी अपने डिफेंस को काफी अच्छे से ट्रस्ट कर रहे थे. Yes, his partnership was finally broken with the ball staying too low, but at the moment England is ahead with 126 runs lead. But ओवरऑल पिक्चर में अगर आ जाते हैं, इंग्लैंड 126 रन लीड, पूरा सेशन अच्छे से बैटिंग की, एंड इंग्लैंड वुड वांट दैट Ollie Pope, who's not out on 148, and Rehan, who's their all-rounder, who's playing good at the moment, bat out that session 1 at least for day 4. If they do that and put up a lead or put up a target in excess of 160, 170, close to that 200 mark, anything can happen. Again, डे 4 या डे 4 एंड और डे 5 स्टार्ट पे अगर बैटिंग करने आती है, दिस पिच इज गेटिंग वेरी स्लो. तो अगर आपको टाइम करना थोड़ा मुश्किल होगा. एनीथिंग फॉर अ न्यू बैटर कमिंग इन, स्पेशली विद दैट न्यू हार्ड बॉल ग्रिपिंग इनटू द सरफेस, वो थोड़ा मुश्किल जरूर होने वाला है. बट एट द मोमेंट इंडिया इज स्टिल अहेड इन द गेम. जब तक 170 180 का टारगेट क्रॉस नहीं हो जाता, इंग्लैंड स्टिल इज अ लिटिल बिहाइंड द गेम. जिस हिसाब से अभी बैटिंग चल रही है, both the batters are proving that on this pitch you cannot go into a shell. The way England has batted and even the way India batted in their first session, again
if you put up a positive intent towards scoring, then you can make runs on this pitch. Of course, आपको आपके defense पे काफी trust दिखाना पड़ेगा, but that is part and parcel of the test. Again, this is turning out to be a very, very good test. Test 1 has given us so much drama, so much, and England has learned so much from just Test 1. There are 4 more tests to go. This is going to be incredible. And with that, we come towards the end of our video. Please, please, please like, share, and subscribe to our channel. You are watching the videos, you are not sharing and subscribing. So please do that. I'm your host, Nishit Dave, signing off. Thank you.